अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली उम्मीद करनी सारे ठीक हो सो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हाँ। अज काफ़ी दिनों बाद अज मैं वॉइस ओवर अपनी वीडियो पर करी रही हाँ। ज़ाहिर है यूके की लाइफ में रहना इस मुल्क में रहना कोई आसानी गल नहीं है। मैं जॉब भी करनी हाँ, मेरे कारण भी 100 काम होंदे करने वाले। ज़ाहिर है जेह्ड़े यूके ने बंदे रहने वाले उन्होंने पता है दिस लाइफ इज़ वेरी बिजी लाइफ इत्थे दी यूके दी। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने तो पहले आज मैं अपने भैन भरावां की एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो ਨੂੰ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पूरी तक ठीक है। राती मेरी सिस्टर ने मैनू फ़ोन किया सी, उन्हें मैनू इनवाइट किया सी अपनी बेटी नी बर्थडे पर। मैनू तो मेरी फैमिली इनवाइट किया सी ने सो जेड़ा ने सुबह दी यानी कि वीडियो मैं तुसें की बनाई तो दसन लगी हाँ। असी जा रहे हैं एजडा। मेरी सिस्टर भी आई सी, मेरा नेफ्यू भी आया सी मैनू अपने घरों लैने वास्ते। तो असी जा रहे हैं एजडा शॉपिंग करने वास्ते। ज़ाहिर है शाम नू बर्थडे पर असी करसां ज़ाहिर है खाना पीना असी लेना शाम नू पकासां तो असी इत्थे आए हैं एजडा शॉपिंग करने ते। We've just arrived at Asda. We're going to do some shopping for tonight's birthday party for my niece. I'm just going to show you some clips of the Asda store from inside. I hope you enjoy the video. Please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you. We have now finished doing our shopping and now we're going to go towards the cake box shop where we have ordered my niece's cake and we're going to pick up the order. Cake box ne dukaan ne cake bahut hi अच्छे होने. They make really nice delicious cakes. I'm not sure if you've ever tried them or not, but if you haven't, you know, feel free to, you know, go ahead and purchase them because they're bahut hi अच्छे होने cake. मेरी बाजी ने बनाए सन होममेड समोसे कीमे वाले नाले वेजिटेबल वाले। इत्थे मेरी बाजी बनान लगे हुए न आलूआं दियां टिक्कियां। ये मैं तुसें दस्सन लगी हुई थोड़े जे क्लिप्स से तैयारी करन लगी शाम ना खाने नी। मेरी बाजी इतना सोहना खाना बनाने इतना डिलिशियस होंदा खुदा पे यकीन रखो दिल नहीं करदा कि छोड़ देना भी इतना सोहना खाना बनाने। Time to fry the समोसे। कीमे वाले समोसे असी फ्राई करन लगे हैं। बाद विच वेजिटेबल वाले फ्राई करसां समोसे। मेरी बाजी इत्थे आलूआं टिक्कियां तलने दी तैयारी करन लगे हुए। So she's just preparing the egg mixture. The samosa are ready now to be taken out. Look how lovely the samosa are turning out to be. Wow. Alhamdulillah, they tasted really, really good. Time to fry the aloo tikkiyan. बाजी मेरी हम बस तैयारी करन लगे हुए आलू दी टिक्कियां की हम बस फ्राई करने दो पासे अंडा लासन तां जे फिर भज्जन ना आलू दी टिक्कियां। I also have a full recipe of this aloo दी टिक्कियां on my YouTube channel. So if anybody wants to know how to make these aloo दी टिक्कियां, please feel free to have a look at my video. Just wanted to show you the ghee samosa that we prepared earlier. Look how nice they look. My sister's just going to turn each and every aloo tikkiya to the opposite side now. So just got to be really careful when you're doing this because this is a bit of a tricky part
of making these aloo and tikkiyan. They can easily break, so be very careful. My sister's just going to show you the inside of the aloo matar keema samosa. Look how nicely it's cooked. आलूआं दी टिक्कियां बनी गईयां तो कितनियां सोहणियां मज़ेदार बनदियां ने आलूआं दी टिक्कियां। कुछ खाना सां बाहरों भी आर्डर कीता सी, पिज़्ज़ा भी, चिप्स भी, चिकन विंग्स भी, बहुत सारियां चीज़ां बाकी भी चीज़ां भी किंदियां सन आर्डर दे ते। I'm just going to show you the final look of all the cooked food that we prepared earlier. So आलूआं दी टिक्कियां मेरी सिस्टर जेह्ड़ी थोड़ी देरी पैह्लें में तुसें दस्सेआ सी बनाइयां सन्ने, कीमे आह्ले समोसे नाल मिक्स वैजिटेबल आह्ले भी। एह् पिज़्ज़ा जेह्ड़ा सी आर्डर कीता सी एह् भी तुसें दस्सन लगी आं। मेरी सिस्टर ने दाल भी पकाई सी, चिप्स भी, चिकन विंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया सी खाने च। सारी फैमिली बड़ी खुश होई सी, सारे असी भैणां भ्राऽ सारे फैमिली सी इकट्ठे होए सां। It was really nice. Time to cut the cake and wish my niece a happy birthday. So this is a big shout out to my niece. Happy birthday from me and my family. And thank you so much for inviting us as well. We had a wonderful day. I hope you have enjoyed my video today. Please don't forget to like and share and subscribe to my channel. Allah Hafiz, Qadar Hafiz, bye.